There's just a lot of like pages and stuff. Could I get it sent to you by the next class? I'll have Yes, all the some of them you can send to me right now. And yeah. okay, send me as per your convenience. Till then, let us start. So I just wanted to know whether you have to study first principle as well or not. I don't think in IGCSE, whatever students whoever I have taught, they did not do first principle method. They just started doing the normal derivatives. I just want that confirmation only. Okay. Anyways, I am considering that you do not have to study first principle method. So I am starting right from the normal derivatives we do. So the derivative of x to the power n is n times x to the power n minus 1. Okay. And this dash sign is what? For derivatives. We write this way as well. We write this way as well. D x to the power n dx equals to n x to the power n minus 1. Okay. And derivative of sine x is cos x. And derivative of cos x is what? Derivative of cos x is negative sine x. Derivative of cos x negative sine x. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of sec x is sec x tan x. Yes, Rajveer. Yep. Do you know these all these standard derivatives? Yes, I do. Derivative of cot x It's just the I know the first three okay. and a bit of the last two. I've seen some. Derivative of cot x is negative cosec square cosecant square x. Derivative of cosec x is negative cosec x cot x. Derivative of
log x, logarithmic function you will be studying. Okay. Derivative of log x is 1 over x. Here, the base of logarithmic function is what? E, natural log. Okay, ln x. We also call it ln x. So derivative of ln x is 1 over x. And derivative of exponent function e to the power x is e to the power x itself. Derivative of a to the power x is a to the power x log a. What is the derivative of root x? It is 1 over 2 root x. By which rule? This rule only. This rule. Okay. And derivative of 1 over x is negative 1 over x square. Now, product rule. When two functions are in the product, okay, suppose we have u and v two functions, then derivative of uv with respect to x will be u times dv by dx plus v times du by dx. U times dv over dx plus v times du over dx. Quotient rule. Quotient rule, if we have two function, rational function in fact, u over v dx, then we have v times du by dx, du over dx minus u times dv over dx and whole divided by v square. This is called quotient rule. And what about chain rule? Chain rule suggests that if a function has not change, it's chain rule. Let's take an example. Suppose we have y equals to square root of 10x square. Okay. Okay. Then derivative of y with respect to x will be, first we will find the derivative of root. What is the derivative of root x? राजवीर साहब रिस्पॉन्ड करिए, और हो सके तो वीडियो ऑन रखिए. मेरा वीडियो ऑफ इसलिए रहता है ना कि फिर नहीं तो पेन जो है वो ठीक से चलता नहीं है. मेरे कंप्यूटर के रिसोर्सेस में प्रॉब्लम है थोड़ी, इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ कभी कभी. ठीक है. अगर मैं ऑन रखता हूँ ना तो थोड़ा हैंग करना शुरू हो जाता है, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ. आप बताइए रूट 10x स्क्वायर का कैसे करेंगे? रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट x का होता है 1 over 2 रूट x, है ना, 1 by 2 रूट x. हम लोग इंडिया में बाय बोलते हैं, है ना, लेकिन बाय मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली. तो बोलना चाहिए 1 over 2 रूट x, बट वी आर वेरी मच यूज्ड टू सेइंग 1 by 2 रूट x. ठीक है. Okay. तो 1 over 2 रूट x होता है रूट x का.
तो यहाँ पर ऐसे मैं आपको सिखा देता हूँ। मेन डिफरेंशिएशन जो है वो चेन रूल है। वंस यू हैव वेरी गुड ग्रिप ऑन चेन रूल, समझो डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हो गया। इसलिए मैं बड़ा टाइम दे करके एकदम अपनी लैंग्वेज में आ गया मैं तुरंत। यू मस्ट हैव सीन द सडन चेंज, क्योंकि जब Yeah. आपको ना, जब आपको किसी को गाली देने हो, भड़ास निकालनी हो, तो अपनी लैंग्वेज में सबसे बढ़िया से क्या सीखते हैं, ठीक है। और जब आपको कोई चीज एकदम बिल्कुल क्लियरली आप चाहते हो कि दूसरे के दिमाग में सेट हो जाए, तब भी अपना लैंग्वेज जो है ना सबसे अच्छे से काम आता है। तो रूट एक्स जो है, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट से पहले देखेंगे, पहले रूट का 1/2 रूट, और एक्स की जगह क्या है आपका, पूरा ये 10x² फंक्शन है। एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह ये पूरा आपका 10x² फंक्शन, दिस वन, Hmm. ठीक है। तो ये 10x² को एज इट इज लिख लेंगे पहले, 10x², ठीक है, लिख लिया। अब जो है ये 1/2 रूट एक्स की जगह, एक्स की जगह 10x², एक्स तो नहीं है, हाँ जी। फंक्शन अलग है। क्योंकि एक्स नहीं है, फंक्शन अलग है, फंक्शन क्या है 10x², तो 10x पर फोकस करेंगे। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x, 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, sec² x² हो गया, x की जगह क्या है x², और सी, And one हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखिए रूट one एक्स का question. डेरिवेटिव। Hmm. यस राजवीर, बोलिए बोलिए। Oh, it's SEC, right? Sec squared. हाँ, सिकेंड को सेक लिखते हैं, सिकेंड, Okay. है ना, साइन कोसाइन, Yeah. कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सिकेंड, है ना। Hmm. तो टेन, 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x। तो x की जगह क्या है, x² है, तो x² के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, x² का डेरिवेटिव 2x होता है ना, x² का डेरिवेटिव Yeah. 2x। तो ये पूरा पूरा आपका आंसर है। फिर से मैं इसको रिपीट करके बताता हूँ, इरेज कर देता हूँ और फिर मैं करके दिखाता हूँ कैसे करें। ढंग से एक बार चेन रूल पकड़ लेंगे ना, तो फिर डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। Okay. देखिए रूट का पहले करना है, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह 10x² है, तो 10x² के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करें, dy/dx 10x²। अब ये x², 10x की जगह x² है, ये एक अलग फंक्शन है, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, x² के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और लास्ट में हमारा फंक्शन क्या रह जाता है x, तो dx/dx तो 1 ही होता है ना, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से चेन रूल में तब तक हम करेंगे until we get x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब इसको लिखिए, तो 1/2 रूट 10x² इंटू 10x² का डेरिवेटिव sec²x², क्यों, क्योंकि 10x का sec²x होता है। अब x की जगह हमारा x² है, तो x² के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करें, या ये वाला पार्ट, ठीक है। Hmm. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपका x sec²x² अपॉन √10x²। क्वेश्चन हम ढेर सारा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट मैं चाह रहा था कि आप बेसिक चीज समझ जाओ कि चेन रूल मतलब ये हो गया कि जितने भी फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन, सबकी डेरिवेटिव निकालेंगे, लास्ट तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जब हमारा 1 आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव, तो फिर ये रुक जाएगा अपने आप, ठीक है।
हाँ जी। और डिफ्रेंसिएशन करना था तो आप पहले ये वाला चीज जो है ना आपको आना चाहिए अच्छे से। और आपने भेजा नहीं मुझे कुछ भी, सिर्फ मुझे ये जानना था कि लिमिट से शुरू हो रहा है आपका कि डेरिवेटिव से शुरू हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में, मैं एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ आपके कोर्स का बुक, मेरे पास होगा, बस निकालना पड़ेगा। आपका एएस लेवल कर रहे हैं अभी कि ए लेवल? AS। एएस कर रहे हैं तो हाँ जी। एएस का बुक, इफ यू कैन सेंड मी सम ऑफ द पेजेस, इनिशियल पेजेस, कोशिश करिए भेजने का, भेजिए जल्दी से। Yeah। तो वहां से सिखाना समझाना आसान होगा ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। फटाफट भेजिए मेरे को, तब तक मैं देखता हूँ आपका बुक मुझे मिल जाए। मेरे पास बुक तो सारे ही IGCSE के थे, लेकिन वो पेंडेमिक में जहां तहां सेव किया, सब वो क्लाउड ड्राइव में कहीं कहीं सेव है। क्लाउड ड्राइव में सेव रहने के बाद भी कभी कभी मिलता नहीं है, किस नाम से सेव किया आपने वो याद रहना चाहिए। अब आपकी क्लास कल ही है ना? Yes। जो आपका स्केड्यूल बना के दिया था उसको डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ एक क्लास को मैंने चेंज कर दिया। कैम्ब्रिज 5th एडिशन आना तो यही चाहिए। कैलकुलस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्री। नहीं, मेरे पास जो बुक है वो आपके सिलेबस में है, और वो बुक है आपके पास, लेकिन ये दूसरी वाली है, ये डेविड रैनर Yeah। की 5th Um, एडिशन एक्सटेंडेड। इसमें I don't, for my like school, ओके। I don't have the book for my syllabus, like the AS Pure 1 and Mechanics book. I only have Pure 2 and Statistics and A level book. ओके ओके Yeah, I don't have the book ओके, for दैट्स my. नॉट एन इशू, वो तो मेरे पास भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट जो है उसमें से आप शेयर करिए, सो दैट एज पर द सिलेबस कराऊंगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर, और तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। Is this the book that you have? जस्ट अ मिनट। Like, is this one?
Yes, yes, I have the same book. Yeah, this is the book that I don't have. This is I the send one it, with don't syllabus. worry. जो Okay. आपके पास है उसके पेजेस में कह रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन उसके Hmm. सर्टेन पेजेस, सो दैट मैं एग्जैक्टली समझ पाऊं कि आपको मैं एएस लेवल ए लेवल सब करा चुका हूँ, बट क्या है ना कि एक्सटेंडेड कोर एचएल, एचएल मैंने कराया है। एचएल जो है एक्सटेंडेड से भी एक लेवल ऊपर होता है, ठीक है ना? तो वो मैच करता है कि नहीं करता है, दैट इज द इशू। और लिमिट से शुरू हो रहा है आपके बुक में कि डेरिवेटिव से शुरू हो रहा है, जानना है। अगर डेरिवेटिव से शुरू हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो मैं कराता जाऊंगा, आपको बुक रहे ना रहे तब भी काम हो जाएगा। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि आपके एग्जैक्ट सिलेबस में आपका क्या है। क्या हो रहा है? पेज नहीं आ रहा है क्या? फोटो नहीं आ रहा है? No, because I can't find the book online. अदर अकाउंट, Sorry? you can't find the book, but you showed me the book in the last class. Was it No, hard yeah, but copy? that's for A level. Okay, तो उसी से करिए, Okay. उसी से करिए जो है आपके पास अवेलेबल ना, उसी से करिए। ठीक है, तैयारी हमेशा बुक के थ्रू होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मैं पढ़ाऊंगा तो सही, आपको सब कुछ मिलेगा, बट ये है कि वो बुक के अकॉर्डिंग होती तो और अच्छी होती। Because you see, like this one has differentiating exponentials and logarithms, but for AS we don't do logarithms. Logarithmic, I'll make you understand. That's why I'm telling you ना, that's why I'm telling you to send you ना, because हमें उसी के अकॉर्डिंग फिर मिल जाएगा। Also on WhatsApp, I sent you the syllabus for AS. You sent me today. No, not today, before. Okay. Okay, yes, yes, you sent me the syllabus. Pure mathematics में you have quadratics, functions, coordinate geometry, circular measure, trigonometry, series, differentiation, integration. Okay. Quadratics we have done somewhere. Okay. And we need to do functions, coordinate geometry. And right now we are doing differentiation. So I think only differentiation part is there. So, okay, let's continue with this. Okay. And the content you sent me was polynomials, modulus function, exponential and logarithmic function, differentiating exponential and logarithmic function. Okay, so let's do some questions. Find dy over dx.
if y equals to x log x plus sin x. Yes, Rajveer, how will you Yeah. find the derivatives? Derivative of y will be, let's write differentiating with respect to x. We get derivative of y is what? Dy over dx. X into derivative of log x is what? What is the derivative of log x? I'm not sure. It's 1 over x. 1. Okay. So this x will be cancelled out. Plus derivative of sin x. Maybe tan x. Derivative of sin x is cos x. Was it cos x? Yes. In place of x, we have x square. So we will multiply by the derivative of x square. So derivative of x square is 2x. So this will be 1 plus 2x cos x square. Okay, this will be the answer. And one most important thing, you need to go through the review as well on Urban Pro. Okay, what you feel, either I am teaching you good, excellent, or bad, whatever you feel, you have to rate there. I have already sent you the review. At Oh, the was end that of the the link? session again, I'll send you. It will Okay. be in group. You will find just after today's live class urbanpro.com. Above that, use that link to review the session, as well as means how do you feel, whether you feel that I'm teaching well. If you feel so, you can rate accordingly. Okay. Yeah. And I'm taking questions from my side, but make sure by the beginning of tomorrow's class, please send me the PDF of your book. That is necessary, because teaching as per the syllabus will be more beneficial for you. However, Okay. I am taking questions from myself. Okay, I'm giving you questions. But the problem is, right, like I get that, but for this book, it's pure maths, like as in it's not the for my syllabus. Like this one is for the A level, and I want to learn the AS one with you. You And want to learn AS book and you don't have AS book, right? That you yeah, want. because this book that the school gave us, this A level book, right? The Yes. teacher, he just chooses some chapters from this, but he teaches himself and he uses like some of the chapters from this book. Okay. So they don't have a AS like the book that is meant for my syllabus. They just use the syllabus from Cambridge and use this A level book. Okay. Yeah. And So basically, I you sent the you book. don't have AS level book. That's why you are not able to send it. Yeah, That. but this book that we do use in our school, I've sent it to you as a PDF already. Yes, you need to send it. Whatever book you have, please send me the PDF before the class, so that we can see framing questions in mathematics. It is not not an easy task. It's very difficult, because if you can get answers of that question, right? However, Yeah. giving questions from differentiation is quite easy. It's not difficult, in fact.
I can give But you. yeah, I sent you the PDF for this textbook already. You sent right now. You have sent it. Yes, yes. You I sent. sent it now and like before. Yes, yes, yes. I got it. I got it. I got it. I got it. Okay. Yes. So first chapter is algebra, charts, indices, logarithm, and equation 1, equation 2, examination question, circular measure, inequalities, function, tangent, normal, stationary values, examination question. Function differentiation is there. Yes. Page number 283. Page number 283. Yes, yes. Now see, once you have a book in your hand, means it's easy to teach, and it means we have n number of questions we can do from there. Okay, rather than framing question. Yes, differentiation 2, page number, PDF page number 290. PDF page number means जो साइड में स्क्रॉलिंग बार होते हैं जहां पे पेज नंबर लिखा हुआ आता है. I am talking about that page number. That is 290. 200 actually 92. 292. Here is the exercise 1. 21A. Exercise 21A. From here we'll be doing. Yeah, I'm there. Yeah. Exercise 21A. So use a substitution to differentiate each function with respect to x. Okay. So we have question 1, 3x plus 1 whole square. Y equals to 3x plus 1 square. Okay. Okay. So put 3x plus 1 equals to t. Okay. 3x plus 1 equals to t. Then we have y equals to t square. Y equals to t square. Differentiating with respect to x. Derivative of y is always dy over dx. Dx. Yeah. And derivative of t square. Derivative of t square is what? 2t. X to the power n. Derivative of x to the power n is n x n minus 1. Okay. So x square. Derivative of x square. In place of n की जगह क्या है? 2 है. X 2 minus 1. That becomes 2x की power 1. That is 2x. Okay. So क्या कर रहे हैं? Whatever the power we have. Power first. जैसे x square की power कितनी है? 2 है. तो 2 पहले ले लिया. And then we reduce the power of variable by 1. समझ में आया? क्या? n अगर पावर है, n को पीछे ले लिया. x की पावर n था पहले, तो एक पावर रिड्यूस कर लेंगे. n minus 1. 2 था तो 2 minus 1. 1. Okay. So t square का derivative 2t. And since we are differentiating with respect to what? X. So t का derivative is what? dt by dx. Now, since we have
t equals to 3x plus 1. Okay. Rajveer. Okay. Yeah, no, I was just looking at the question again. Sorry. Okay. Yes. Okay. t हमने क्या लिया था 3x plus 1. Now differentiating with respect to x. So t का derivative dt over dx. Dx. Yes. So then it would be 3. 3x squared. No. 3 Because on x की power is 1. So take 1 and then x की power 1 minus 1, 0. So 1 into x की power 0. That becomes 1 only. So derivative of x is always 1. Kx, derivative of kx, constant with any variable. So okay. constant को बाहर रख लीजिए and derivative of x with respect to x is what? 1. So k 3 हो गया. और derivative of any constant when it is not associated with any variable is 0. So dt by dx क्या आ गया? 3 आ गया. अब यहाँ पर dt by dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना, बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको. सो रिप्लेसिंग dt by dx, dy by dx equals to 2t and dt by dx is 3. So that becomes 6t. So 6 and t की वैल्यू क्या लिया था हमने? 3x plus 1. This will be the answer. तो ये बहुत बड़ा हुआ. और हम जो इंडिया में करते हैं ना, वो देखो एक स्टेप में, वो भी बताता हूँ आप. y equals to 3x plus 1 whole square. मैंने अभी बताया था कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है. कंसिडर दिस 3x plus 1 एज x. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. x की जगह क्या है? 3x plus 1. अब ये 3x plus 1 का डेरिवेटिव 3. तो ये हो गया 6 3x plus 1. ये आंसर है एक स्टेप में. और यही चीज जो है इतने सारे स्टेप में हमने किए. ठीक है. Let's do question number 3. So y equals to 3x minus 4x minus 5 to the power 5. Okay. Differentiating with respect to x. dy over dx. x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है राजवीर जी? Sorry? x की पावर 5, x to the power 5 का डेरिवेटिव. Wouldn't it just be 5? अभी भी समझ में नहीं आया. 5 to पहले ले 4? लीजिए और x की पावर 5 to the power 4? यस, x to the power 4. तो x की जगह क्या है आपका? 4x minus 4x 5. minus 5. तो इसकी पावर 4 into डेरिवेटिव ऑफ 4x minus 5. So 5 4x minus 5 की पावर 4 into
और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x का क्या होगा? 4x का 4 और 5 का 0, तो दिस बिकम्स 24x minus 5 power 4. This will be the answer. ठीक है। Okay, that makes sense. देखिए, बुक से करने पर फर्क तो पड़ता है। बुक आपके सामने है तो चीजें समझ में आएगी कैसे क्वेश्चन हो रहा है। एट द सेम टाइम क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड लेवल का आपके सामने आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। Oh, okay. Y equals to 2x4 minus 5 की पावर 1/2। ओके, 1/2 power means square root, right? Both are the same thing. So differentiating with respect to x, derivative of y dy over dx, हाफ को पहले ले लो, 2x4 minus 5 हाफ माइनस 1, पावर में 1 माइनस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, दैट यू नो। एंड सिंस ये x नहीं है तो चेन रूल कहता है कि इसके भी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चेन रूल कहता है। Yeah. तो हाफ 2x4 minus 5 to the power half minus 1 is what? Negative half. 1/2 minus 1 is negative half. और डेरिवेटिव ऑफ 2x4 बता सकते हो आप? ये इसका डेरिवेटिव बताओ। 2x4, so that'll be 8x4 को पीछे लेते आओ। 4 जो है ना उसको सिर पर बिठा रखा है आपने। 6x3. हाँ, 8x3 एंड 5 का कांस्टेंट का 0। तो बस अब जो है आपका काम हो चुका है। यू कैन राइट 4x3, और ये जो माइनस हाफ पावर है ना वो नीचे आप लिख सकते हो इस तरह से, 2x4 minus 5 की पावर हाफ। ये पता है ना Yes. कि नेगेटिव पावर नीचे अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है पावर। ठीक है। Yeah. So this was 7th question. Now we are going to do question number 10. I am especially taking those questions जो आपको डरावना दिखे। Yeah, they look very scary currently. तो आपको जो स्केरी दिखेगा वही सब क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूँ इंटेंशनली। √x plus 3x। ओके, तो we can use this question with two approaches. पहला कि हम इसको ऊपर ले जाकर के नेगेटिव पावर ले लें, -1 पावर ले लें, फिर डेरिवेटिव निकालें। दूसरा क्वोशेंट रूल। तो अभी क्वोशेंट रूल आपके यहाँ पर आया नहीं है तो क्वोशेंट रूल अभी यूज नहीं करेंगे।
we will write this as root x plus 3x and to the power -1. Can we write that? Negative Yeah, power? because they mean the same thing. Yes. Now dy over dx equals to -1 take outside and root x plus 3x power -1 that is -2, and we shall multiply by derivative of root x plus 3x as well. Okay, so this will become minus root x plus 3x and power is -2 and multiplied by root x ka derivative is 1 over 2 root x always plus 3x 3 और x की पावर 1 है तो 1 minus 1 0 है ना, तो 1 हो जाएगा 3. And 1 times 3, 3, yeah. Okay. So this can be written as minus 1 over root x plus 3x whole square or into 1 over 2 root x plus 3. You can leave over here or you can further simplify it by taking what? LCM, but that is needless to do. That is not necessary. We can leave over here. So this will be the answer. What we have done, 1 over root x plus 3x can be written as root x plus 3x to the power -1. Since -1 is power, so we have taken -1 outside, means before the term, and root x plus 3x to the power -1 and -1. And x and -1. Yeah. We reduce the power. So that becomes -2. So since it is -2, it can be taken as reciprocal and with positive exponent. And 1 over 2 root x plus 3. This is the answer. Okay. Yeah. So then, okay. Why 1 over 2 root x plus 3? According to chain rule. And this same thing can be done. Yes, this same thing can be done with another approach. We can take root x plus 3x as t. Then we can do that. I'm just making you understand by the method. It is given in your book. So y equals to 1 over root x plus 3x. Let us put t equals to root x plus 3x. Differentiating with respect to x, dt over dx equals to derivative of root x is what? 1 over 2 root x. Derivative of 3x is 3. Let it be remain. And here it will become y equals to 1 over t. That is t to the power -1. So y dy by dx equals to -1 t की power -1 -2 into dt over dx. dt over dx. So that becomes -1 over t square into dt by dx is what? 1 over 2 root x plus 3. That is dt over dx. And now substitute the value of t.
you will get the same thing. One over 2 root x plus 3. Actually, you have got the same thing. These two things are the same. These two things are same. We'll be doing question number 12. Oh, okay. 12 is 7 over x cube plus 3x, x cube plus 3x, and power is 1 over 3. Y equals to. Okay. So dy over dx equals to 7 times x cube plus 3x power negative 1 over 3. Okay. This is not dy by dx actually. This is y only because we have not differentiated it. We have just simplified it. We have taken the variable term in the numerator. Now dy over dx 7 times minus 1 over 3 x cube plus 3x power minus 1 over 3 minus 1. Okay, I have one question, right? Yes. I just want to make sure, to make it 7 times x cubed plus 3x to the power negative 1 over 3, we just multiplied it by 7, right, before? We just multiplied 7. Yeah, like yeah. First. See, 1 over x cube plus 3x to the power 1 over 3 can be written as x cube plus 3x to the power negative 1 over 3. So 7 times 1 upon this, function. Okay. Yeah. So 7 is as it is. We haven't taken as the product of 7 or multiplied from ourselves. This can be written as, suppose this is fx. Okay. So 7 upon fx can be written as 7 into fx power minus 1. Okay. So we haven't multiplied 7 from our. It's given in the numerator and it is still in the numerator. We have just brought this denominator function in the numerator with negative exponent. Now, since we have x cube plus 3x as the function, so we will multiply with the derivative of x cube plus 3x. So this becomes over 3, 7 over 3, and x cube plus 3x to the power minus 1 over 3 minus 1 is what? Minus 4 over 3. And it is derivative of x cube is 3x square and derivative of 3x is 3. That's it. This will be the answer. Okay. So one more question, question number 24. Most of the questions are of same type.
That's why I'm just choosing those questions which are a little bit different. Y equals to cube root of x minus x. No, isn't it it's 4, not cube root? It's yes, 6 minus root. I wrote down different question. It's 4th root of 6 minus root x. Yes. So what we do first of all this way, 6 minus root x power 1 over 4. Can we write that? Yes. Now it's time to differentiate it. dy over dx. Take 1 by 4, the power first, then write the given function 6 minus root x, and then reduce the power by 1, and then multiply by the given derivative of given function. So this will be 1 over 4, 6 minus root x, power is negative 3 over 4, and derivative of 6 is 0, and minus derivative of root x is minus 1 upon 2 root x. So this will be, this negative sign come in the beginning, bring it in the beginning, and 8 root x, okay, and 6 minus root x, power is negative 3 over. Did you understand? This 4 times 2 root x is 8 root x. 4 times 2 root x in the denominator, 8 root x, and in the numerator we have 6 minus root x, negative 3 over 4. So this will be the answer. Okay. So your homework is the remaining question. Now you have to send me the work. Forget the previous work. Now start doing from your book. Okay. If you haven't done previous work, forget. You need to do work, because if you don't do, then your basic concept, definitely you can lose something. This will be a loss of basic concepts. So you need to do the rest of the questions. Definitely, So 20. we cannot discuss each and every question in the class that you can understand. So I'm doing exercise 21A. Yes, your homework is exercise 21A. At the end of the PDF, it will always be homework. If you have any confusion, you can see from here what's your homework. Homework is exercise 21A,